everyone, this is Advocate Radhika Sharma, associate with Lexis and Company. Welcome to our channel Lex Click. So today हमारा जो वीडियो का टॉपिक है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में है, जिसका जजमेंट आया था 2015 में. बेसिकली ये जो केस है रिलेटेड है विद सेक्शन एंड आर्टिकल्स लाइक सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and Article 19(1)(a and Article 19 subclause 2 of Indian Constitution. So अब हम हमारे केस की तरफ आते हैं. तो जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है वो फोकस करता है ऑन द चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 66A, जो कि क्रिमिनलाइज थी ऑनलाइन स्पीच दैट वाज डीम्ड ऑफेंसिव और कॉज्ड अनाउंस. एंड सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सेक्शन 66A इज़ वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And further, the court ruled that the terms offensive and annoyance used in section 66A were vague and overboard, leading to arbitrary and excessive restriction on speech. It emphasized that restriction on speech must be reasonable and narrowly tailored to protect legitimate interests such as public order, decency or morality. And the judgment recognized the importance of internet as a platform for free expression and the need to protect the rights of internet users. And further that the court held that section 66A had chilling effect on freedom of speech, leading to self-censorship and shifting of legitimate dissent. It said that the government's power to restrict speech under Article 19(2) must be exercised sparingly and with utmost caution to prevent abuse. The court declared section 66A unconstitutional and struck it down as it violated the fundamental right to freedom of speech and expression. After that जजमेंट था उसने हाईलाइट किया द इम्पोर्टेंस ऑफ अनहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड प्रोटेक्टिंग द ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इन द डिजिटल एज. The case established a landmark precedent in safeguarding online freedom of speech in India. So that's all about this judgment. We'll see you super soon in our next video. Till now, thank you guys. Thank you for watching us.